Hello students, this is Nishi Mishra, Faculty of Social Studies at MLZS JHANSI. Students, in the previous three lectures, we were discussing the second chapter of geography, which is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Today we are going to start the last part of this chapter, which is natural vegetation and wildlife. So children, what do you understand by natural vegetation? Like, अगर मैं vegetation की बात कर रही हूँ, so I am somewhere talking about plants, right? So natural vegetation can be defined as the original plant life of a region which is untouched by the human influence. Now, what is ecosystem? Ecosystem is what? It refers to the life-supporting system in the biosphere where the living beings are interdependent and interrelated to each other for survival. मतलब everyone who are in the biosphere, जितने भी लोग इस biome में हैं, they are interdependent on each other, एक दूसरे पर dependent हैं. अब हाउ लाइक यू विल से कि कैसे डिपेंडेंसी है, प्लांट्स हमारे ऊपर कैसे डिपेंडेंट है या हम प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हैं. सो very like the first important thing that signifies our dependency on plants is that we take oxygen from them. तभी हम जो है सर्वाइव कर पा रहे हैं. सो प्लांट्स अगर नहीं होते तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होती. सो प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन. देन अगर प्लांट्स को ग्रो नहीं करते, उन्हें प्रॉपर ऐसी कंडीशंस नहीं देते कि वो ग्रो कर पाते, तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती. तो इससे हमें क्या पता चला? दैट वी बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अब एनिमल्स के लिए कैसे? दैट दे प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट, हाइड, वूल एक्सेट्रा. Insects also like we are also dependent on insects, like bees provide us honey. They help us in the pollination of flowers, and they are a very important role in the ecosystem. That is that they are the decomposers, right? Now, what are the factors that influence the plants and wildlife resources? See, the distribution of plants and animals on the earth is determined by the क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया. प्लांट तो क्या है? पेड़ है, जो भी जहाँ पर भी उसको लगा देंगे रूटेड हो जाएगा. इट कैन नॉट मूव. तो प्लांट क्या करता है? ट्री क्या करता है? अपने आप को इट अडेप्ट इट सेल्फ एज पर द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. वेयर एज द एनिमल्स ऑल्सो डू द सेम थिंग. लेकिन कई बार क्या होते हैं? द एनिमल्स कैन माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नाउ सी हाउ दीज natural vegetation and wildlife distributed all over the world. See that we are having the main vegetation types as forest, grasslands, scrubs and tundra. So forest मतलब जंगल जो है हमारे पास. grasslands मतलब जहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज नहीं है, लेकिन grassland ग्रासी एरिया बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो वो अवेलेबल है. स्क्रब्स मतलब जो शूटेड प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स अवेलेबल हैं. एंड द टुंड्रा वेजिटेशन मीन्स जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज़ में, जैसे एंटार्क्टिका है या जहाँ पर बर्फ़ जमी होती है थ्रू आउट द ईयर, द प्लांट्स विच ग्रो देयर, ये वो कौन से होती है? टुंड्रा वेजिटेशन. सो द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी वहाँ पर ह्यूज ट्रीज में थ्राइव. सो द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग द अबंडेंट वाटर सप्लाई. The regions of moderate rainfall, short stunted trees and grass grow, forming the grasslands of the world. In the dry areas of low rainfall, thorny scrubs and shrubs grow, and the forests are broadly classified as evergreen and deciduous. कैसे क्लासीफाई किया हमने फॉरेस्ट को? या तो वो एवरग्रीन होंगे या तो क्या होंगे? डेसिडुअस होंगे, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? व्हेन दे शेड देयर लीव्स. सो एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स इन एनी सीजन ऑफ द ईयर, whereas the deciduous forest shed their leaves in a particular season to conserve loss of moisture through transpiration. Now डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. लाइक वी ऑल नो दैट हमें क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है. सो द फॉरेस्ट आर अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, डिमांड्स ऑफ द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेटलमेंट्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन हुआ. वी आर कटिंग द जंगल्स एंड वी आर बिल्डिंग आवर ओन हाउसेज, इंडस्ट्रीज, राइट.
नाउ सी द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ वेरी मच नेसेसरी. अगर हमें सर्वाइव करना है तो कंजर्वेशन इज़ रिक्वायर्ड. So the ways of conserving forest are afforestation, check on urban growth and restrictions on mining and agricultural activities. Afforestation means that we need to plant more and more trees. अर्बन ग्रोथ मतलब हमें ऐसा नहीं करना है कि जो अपने अर्बनाइजेशन के लिए, अपने शहरीकरण के लिए या अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई बनाने के लिए हम क्या करें, फॉरेस्ट को काट दें. और रिस्ट्रिक्शन ऑफ माइनिंग एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ मतलब हमें प्लांट्स को उसी रिटेन करके रखना है. ऐसा नहीं है कि हमें जो है अपने फ़ायदे के लिए ट्रीज़ को या फॉरेस्ट को कट करके रखना है. राइट. सो इन द नेक्स्ट lecture we are going to discuss about the wildlife resources. Thank you for today.